हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 13 फरवरी। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड देन मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज हम लोग एक न्यूज़ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट न्यूज़ इन द सैटरडे डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज उसके बारे में पूरा लेंथी एडिटोरियल आया है, सो वी विल डिस्कस दैट अबाउट द आर्टिकल 26B of the constitution and article 21 of the constitution. Okay, so let's start the news. The first is appointment of new governors. So the president has appointed 6 new governors. Okay, so if the name of the 6 new governors are the first one is Justice S. Abdul Nazir. So he is the retired Supreme Court judge and he was the part of the constitution benches which have delivered judgment on important issues such as demonetization, reservation for Marathas, Ayodhya land dispute, instant triple talaq, and the right to privacy. Okay, and he will be the governor of Andhra Pradesh. Then Lieutenant General Kalvaiya Trivikram Parnaik, he has served as the commander of the Northern Command and he will be the governor of Arunachal Pradesh. The next is Lakshman Prasad Acharya. So he is a BJP leader and he is a member of the Uttar Pradesh Legislative Council and he will be the governor of Sikkim. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी गवर्नर्स अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं उसका एक टेबल बना सकते हैं कि ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ओके, द नेक्स्ट इज शिव प्रताप शुक्ला. ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इन द मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम 2014 to 19 एंड ही विल बी द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हुआ है. ओके, वेयर सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द न्यू चीफ मिनिस्टर. Then Gulab Chand Kataria, he is a sitting leader of the opposition in Rajasthan Assembly and he will be the governor of Assam. Okay, along with that अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किया है ऑफ वन गवर्नर एंड वन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. सो महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर, दैट इज राधा कृष्णा माथुर. The next is 4G in name only, data needs stutter in grey spots in India. तो यहाँ पे देखिए ग्रे स्पॉट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक होता है वाइट स्पॉट. वाइट स्पॉट का मतलब प्लेसेस विदाउट सेलुलर कनेक्टिविटी, दे आर कॉल्ड एज वाइट स्पॉट्स. जैसे कि इनएक्सेसिबल एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, दे विल बी कॉल्ड एज वाइट स्पॉट्स. उसके बाद फिर एक अर्बन एरिया होता है जहाँ पे कनेक्टिविटी इज नॉट अ इशू. अब इस रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना, समझो ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, इसके बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं अर्बन पेरिफेरी. वी कॉल दिस एरिया एज अर्बन पेरिफेरी. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोबाइल टावर्स तो हैं. प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मोबाइल टावर्स हैं जो कनेक्टिविटी एंश्योर करते हैं, बट देर आर नॉट इनफ मोबाइल टावर्स. देर आर फ्यू मोबाइल टावर्स जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्पेशली इन दी अर्बन पेरिफेरी एरियाज और द एरिया which is developing into an urban settlement. Got it? That is called as urban periphery. Got it? So they are called as gray area. तो gray area का problem क्या है? That which shows connected but may not let users get enough of the access. ठीक है कि access जो है इंटरनेट का स्पीड स्लो होगा, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, एवरीथिंग फाइन. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे that between the villages without any 4G network coverage whatsoever and the large cities where high speeds are taken for granted, there is often an ignored smaller urban settlement struggling with weak connectivity. These towns do have 4G network towers, but telecom users such as Mr. Qureshi, जो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है गुजरात का, they struggle to get usable internet. Okay, now what is the reason behind that? Because there are not enough towers and those that are installed are overloaded with traffic from a high number of users. Fine. अभी recently TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, it has said कि जो अब 4G का speed होगा, it will be upgraded from 512 kbps to a minimum of 2 mbps. मतलब 4G का जो स्पीड बैंडविड्थ है उसको बढ़ा दिया गया है, 512 से 2 mbps किया जा चुका है. Now जो TRAI है, Telecom Regulatory Authority of India, it has 3 main telecom providers, okay, and it classify the majority of their subscribers as broadband customers. तो broadband customers का मतलब that they can access 4G speed, that is 2 mbps. Now the next news is about Maharishi Dayanand removed evils falsely attributed to religion. तो महर्षि दयानंद जो हैं, जब हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड में, तो इनका नाम जो है वो उस वक्त के एरा में आता है, महर्षि दयानंद. सो ही हैड एस्टेब्लिश्ड
आर्य समाज, ठीक है, आपने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आर्य समाज। So Arya Samaj, it was established by Maharishi Dayanand in 1875। महर्षि दयानंद जी का जो मूल नाम था वो था मूलचंद। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उस वक्त जो है बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स इंक्लूडिंग विद्यासागर, ओके, ईश्वर चंद विद्यासागर, ओके, देन राजा राम मोहन रॉय, दे cited the religious text to reform the religion in India, that there were many evil practices, okay, which had their sanctions from religion, but they took the help of religious text only to remove these evils from the Hindu religion. So that is what our Prime Minister is referring to in commemorating a celebration for Maharishi Dayanand Saraswati's 200th birth anniversary, that he founded Arya Samaj and he fought evils which was falsely attributed to religion with the light of religion itself. This is very important. इन्होंने religious text को use किया उन सारी रूढ़िवादी चीजों को हटाने के लिए, ठीक है ना, जिनका सैंक्शन खुद रिलीजन से ही था, ठीक है। Now see, the Prime Minister has said that he was fortunate to have been born in the same land as Swami Dayanand in present day Gujarat and spoke of how his ideals continued to impact his life. So यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि महर्षि दयानंद he was born in गुजरात। चलिए एक न्यूज है, अम्बेडकर्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एज लॉ मिनिस्टर मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में देयर इज नो लेटर related to resignation of Dr. B.R. Ambedkar from as the Law Minister of India. So he was the Law Minister of India in Nehru's cabinet, and he offered his resignation, okay, on the issue of Hindu Code Bill. Now let's talk about this editorial. The spirit of the law lies in the dissenting judgment. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एक केस की बात कर रहे हैं, 1962 की केस है ये केस का नाम क्या है, सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया था 4:1। तो 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4 जजेस दे वर पार्ट ऑफ मेजोरिटी डिसीजन एंड वन हु वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज BP सिन्हा, he had the dissenting judgment। तो यहाँ पे जो ऑथर डिस्कस करने वाला है वो डिस्कस करने वाला है डिसेंटिंग जजमेंट। नाउ व्हाई डिसेंटिंग जजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड, ओके, सो इट इज रिलेटेड विद राइट टू रिलीजन enshrined in Article 26, especially Article 26B, which gives any religious denomination the right to manage their own religious affairs, ठीक है ना। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बट आर्टिकल 26B में ये लिखा हुआ है। नाउ देयर इज वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, ठीक है, जिसका जो एम्बिट है वो बहुत ही बड़ा है राइट टू लाइफ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक्ट है जो अब प्रेवलेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट 1949। So this Bombay Prevention of Excommunication Act जो है, it prohibited religious communities from expelling the individuals from a group's membership। ये आप जानते हैं इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ रिलीजियस टेनेट्स फॉलो नहीं किया या सोशल ग्रुप का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया तो आपको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज excommunication। Then this Bombay Prevention of Excommunication Act, okay, it prohibited religious communities from expelling the individuals from a group's membership। ये एक्ट था। इसमें सेक्शन 3 जो था दैट वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, that this section 3 of this act was challenged by the then leader of the दाऊद बोहरा कम्युनिटी दाई उल मुतलक, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि दाई उल मुतलक दाऊद बोहरा कम्युनिटी का में जो पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेशन है, जो लीडर है दाऊद बोहरा कम्युनिटी का, उनका जो पावर है, पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेशन, ओके, इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 26B। It means it is the essential religious practice, and the Supreme Court in this judgment it upheld the Article 26B against Article 21, ठीक है, saying that yes, excommunication power of the leader of the Dawood Bohra community is essential religious practices and is protected under Article 26B of the Constitution। बट इसको डिसेंट किसने किया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BP सिन्हा। He said this law is declared the law unconstitutional। तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने जजमेंट ने क्या कहा था,
सो सी जजमेंट ने कहा था दैट इट डिक्लेयर्ड द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा लॉ? ये वाला लॉ, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949। साथ साथ में यहाँ पे जो दाई का पावर था, दाई उल मुतलक का जो पावर था टू एक्स कम्युनिकेट वॉज एसेंशियल टू द ग्रुप्स फेथ, ओके, that the legislation in the name of social welfare cannot be allowed to reform a religion out of its existence। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहां पे द राइट ऑफ द दाऊद बोहरा कम्युनिटी टू एक्स कम्युनिकेट वाज upheld एंड दिस एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, अब यहाँ पे फिर से महाराष्ट्र में 2016 में एक एक्ट आया है, ओके, सोशल ऑस्ट्रकाइजेशन इज प्रिवेंशन एक्ट, ओके, 2016। तो उसमें देयर आर टोटल 16 टाइप्स ऑफ social ostracization which has been banned or to be punished with 3 years imprisonment। उसमें से एक जो सोशल ऑस्ट्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड विद एक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। सो नाउ again it is conflicting with the power of the excommunication of the leader of the Dawood Bohra community, so again it has been challenged। So now what Supreme Court has done that on February 10 2023 Justice A.S. Oka, okay, in the judgment Central Board of Dawood Bohra Community versus State of Maharashtra has agreed that it merited reconsideration for 2 reasons। So what are these 2 reasons? First, the original ruling had failed to examine whether the rights of religious denominations ought to be balanced with other fundamental rights। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे it is basically social rights versus individual rights, social rights versus individual rights। आपने सबरीमाला जजमेंट का नाम सुना होगा, उसमें भी यही चीज कॉन्फ्लिक्ट में थी, सोशल राइट्स वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स। Again this thing has come into fore because of this judgment। That's why the Supreme Court के जो जज हैं Justice A.S. Oka, he has referred this to the larger bench of Supreme Court। Second point is, this is very important, constitutional morality। This was again discussed in Sabrimala case that since Sardar Sayyidna, Indian jurisprudence has evolved to a point where any act of excommunication ought to be tested on the touchstone of constitutional morality। ठीक है ना, कि मतलब देखिए एक होता है सोशल मोरालिटी, ठीक, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज एनश्राइन किया गया है, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है ना, ये सबको अपहेल्ड करना, नॉट सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अगर आप ये पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या होता है, तो अगर आप एक बार प्रीएम्बल अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या होता है। तो उसके बेस्ड पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज बेस्ड अपॉन दोज वैल्यूज। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम बीपी सिन्हा जी का अगर जजमेंट, अगर हम जो डिसेंटिंग जजमेंट था, तो इट इज रिलेटेड विद एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइक सी इन वन इंस्टेंस द कोर्ट फाउंड दैट द तांडवा डांस प्रैक्टिस्ड बाय द आनंद मार्गी was inessential to religion even though the sect's founder expressly mandated the performance of the dance। ओके, तो यहाँ पे भी एक ये हो चुका है, ठीक है, एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। तो ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन है, so if you will see that in Shirur Mutt case it was held that only those aspects of religion which are essential to faith will be protected by the constitution। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली देखिए आपने कर्नाटका में हिजाब केस देखा था, तो उसमें जो कर्नाटका हाई कोर्ट था उसने भी ड्यूरिंग द हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं माना था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी प्रैक्टिस जो है अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है then that will not be protected under article 26 of the constitution। okay, same thing like that। तो यहाँ पे क्या है that this approach of essential religious practices, okay, which Supreme Court discusses, okay, based on the religious scriptures, ठीक है। so here the Supreme Court is assuming the responsibility of theological authority and it interprets regional scriptures to determine which practices were in fact central to faith। अब यहाँ पर हम देखेंगे that this approach undermined the elementary rationale behind the guarantee of religious freedom that members of religious groups must enjoy an ethical autonomy to determine for themselves how best to lead their lives। ठीक है, तो ये जो है essential religious practice का जो concept है वो इसको undermine करता है। The second is
कि जो सरदार सैयदना केस है इसमें द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन ऑल्सो मेंट दैट द कोर्ट वॉज समटाइम अनविलिंग टू स्ट्राइक डाउन अ प्रैक्टिस दैट impinged on individual liberty merely because the practice in question is essential to faith। तो यहाँ पे देखिए जो आर्ग्यूमेंट इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि क्या हमें एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन को देखना चाहिए या किसी भी प्रैक्टिस का किसी इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ रहा है वो देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो बट उसका इंडिविजुअल लिबर्टी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, तो हमें किसको वेटेज देना चाहिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को या इंडिविजुअल लिबर्टी को। सो हियर दैट्स व्हाट द ऑथर इज हाईलाइटिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डन इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के 1962 में बीपी सिन्हा, उन्होंने देखो क्या कहा है that it was immaterial whether the practice of excommunication was essential to religion। कि कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू रिलीजन, कोर्ट को ये देखना चाहिए कि व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन द पर्सन हु हैज बीन एक्सपेल्ड। ओके, so he says that a person who had been excommunicated would be disentitled from using the communal mosque and burial ground and it will practically be considered as untouchability which is banned under article 17 of the constitution। ये बीपी सिन्हा जी का जजमेंट। ओके, अब जो जस्टिस ओका हैं देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा है। Even assuming that the excommunication of members of the Dawood Bohra community is always made on religious grounds, the effect and consequences thereof on the person excommunicated needs to be considered in the context of justiciable constitutional rights। Okay, तो ये कह रहे हैं कि though there may be the power of the Dawood Bohra community for excommunication on religious ground, but इसका effect और consequence उस person पे देखना पड़ेगा in the context of constitutional rights which has been guaranteed under part 3 of the constitution। So he is saying author that if autonomy vested in groups over matters of religion is allowed to trump the rights guaranteed to individual members, okay, the central tenets underlying the constitution will fall, will cave in matlab will fall। Okay, so these are the gist of this editorial। So this is very important editorial especially for students who are preparing for CLAT। Now coming to the next, India US Space Corporation from handshake to hug। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए हैं इंडिया और यूएस के स्पेस कोऑपरेशन में, और इन्होंने उसका दो चीज में ये आर्टिकल आप कर सकते हो, एक तो चैलेंजेस, सेकेंड इज सॉल्यूशन। challenges and solution। तो देखिए why we are discussing this article, actually we are discussing the article because India and US they have recently signed a very important document, it is called as ICET, Initiative on Critical and Emerging Technology। आपने सुना होगा कि NSA जो हमारे इंडिया के हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल और जेक सुलिवैन who is the national security advisor of US, they both met in USA and the outcome of that meeting was this document that emphasize on collaboration on emerging technologies, okay, including space। So if you will just see that now we will see that India and USA, so what are the divergences between the India and US on space। The first is structural factor। जैसे कि अगर आप यूएस का देखोगे तो यूएस का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, ओके, so it is related to exploration of lunar surface, exploration of lunar surface। but अगर आप इंडिया का देखोगे उसी जगह पे कैपेबिलिटी, it is more about building the capability in and under earth orbits। what it in and under earth orbit, ठीक है ना, हमारे पास प्रोब मिशंस हैं, चंद्रयान मिशंस प्रोबिंग द मून बट नॉट लैंडिंग ऑन द मून। आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है टू यूज मून फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके, बट इंडियाज फोकस इज करेंटली ऑन orbits। Then if you will see the Gaganyaan human space flight program, it hopes to sustain India's human presence in space for the long term, okay, but India's top priority is increasing its satellite and launch capability in earth orbits। The second is asymmetry in capabilities। अगर आप यूएस का देखोगे they have the highest number of registered satellites in space, it also has a range of launch vehicles serving both commercial and national security needs। then private sector involvement is also very high in the US। but अगर आप देखोगे इंडिया का it has just over 60 satellites in orbit and it cannot undertake double digit launches annually। double digit का मतलब 9 से ज़्यादा नहीं, 10 11 12 ऐसे नहीं। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है it has been recently opened in India, the space sector has been recently opened for private sector in India। उसके बाद the third problem is that
how to govern the space activities on the moon and other celestial bodies, इसमें भी divergence है दोनों countries का. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि what is the solution, the first is engagement between academics, private sector and state-led entities in the two countries. Okay, some of this example is that highly specialized project where NASA and ISRO have collaborated, which is called as NISAR. It is synthetic aperture radar mission. Okay, the next type of cooperation can be state between state and private entities. Okay, so here you can see that there can be collaboration under the National Aeronautics and Space Administration's commercial lunar payload services and Indian aerospace companies. Then there could be a consortium led by government-owned New Space India Limited, which involves private companies in the US. This is the third solution. The next very important is the saga of appointing Justice Victoria Gowrie. तो जैसा कि हम जानते हैं विक्टोरिया गौरी, शी हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एंड her name was cleared by the collegium, and then there was the petition in the Supreme Court regarding her name cleared by the collegium system. तो उसके बाद collegium system में जब सुप्रीम कोर्ट में गया, या जब बाद में हम DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि that the collegium did not have enough information related to hate speech made by her in the past. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे that the petitioners who were represented by senior advocate Raju Ramachandran and advocate Sanchita Ain, they quoted the Supreme Court judgment in Mahesh Chandra Gupta versus Union of India 2009 case, which held that questions of eligibility of a candidate and effective consultation for appointment as the High Court judge under Article 217(2) of the Constitution was open to judicial review. अगर किसी का कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है but there is no eligibility, okay, that if there is a question related to eligibility and effective consultation for appointment as a high court judge, it is open to judicial review. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे that यहाँ पे है कि that the bench has responded that the scrutiny process was fairly robust and included taking the opinion of consulting judges in the Supreme Court and the High Court. Fine. Then they say that the question of eligibility is under judicial review, not suitability. तो eligibility जो होता है, it is governed under Article 217(2) of the Constitution. The next is the suitability of a candidate was the domain of the collegium, as it involved a procedure designed to test the fitness of a person, including her character, integrity, competence, knowledge, and the like. ठीक है. So here the Supreme Court is making a distinction between eligibility and suitability. The next question which arises is that justice without fear or favor, ill will or affection is the cardinal creed of our constitution and solemn assurance of every judge to the people of this great country, as highlighted in Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India case. ठीक है. तो यहाँ पर the petitioners are saying that she has already made a hate speech against Muslims and Christians. Okay, fine. So ये जो condition है ये violate होता है. So they have referred to the Supreme Court's 2009 judgment in N. Kannadasan versus Ajay Khose, which said a judge must have these basic qualities and must be found to possess the same. Okay. The next is the demand for greater Tripura land by the Tripura Motha. Tripura Motha जो है वो एक political party है which was floated in 2019 by Pradyot Vikram Manika Debbarma, who is the son of Tripura's last king. Okay, and it is in news. So if you will see that the full form of Tripura Motha is Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance. Now here they are creating the demand for greater Tripura land. Okay, now what is the greater Tripura land actually? So greater Tripura land means it will consist of those areas where tribals of Tripura are residing. Okay, and now they want that a new state should be created under Article 2 and 3 of the Constitution for 19 indigenous tribes of Tripura, and it goes beyond the TTTAADC area, that is Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, to include several other villages where Tiprasa का मतलब क्या हो गया, indigenous people of Tripura, they reside in large numbers. Got it? तो ये इनका एक डिमांड है कि हमें एक ग्रेटर Tripura लैंड चाहिए which consists of all the areas inhabited by tribals of Tripura. Why they are saying that? Now that is important. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे that अगर आप 1941 सेंसस को देखोगे तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स इन त्रिपुरा स्टेट वाज 50-50. बट
if you will see that अब जो tribal population है it has been reduced to 37% due to huge influx of refugees from East Pakistan. So you will see that between 1950 and 52, 1.5 lakh refugees have entered Tripura for shelter. Then the flood of refugees led to bitter differences and eventually conflict between the tribals and the non-tribals escalated in 1980 and took the shape of armed insurgency. And hence since then there has been the demand of Greater Tripura land. तो पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड है इट मीन्स डिमांड ऑफ a new state in Tripura where only tribal peoples are residing or other villages where they are in majority. Okay. The next is Aero India flies high with 98 participating nations. कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं ये क्लैट के पैसेज का भी पार्ट बनते हैं. So it is a 5-day event and MOUs of worth 75,000 crore is expected to be signed and India is going to pitch indigenous military hardware to friendly countries. Okay, so Prime Minister Narendra Modi, he will inaugurate the 5-day Aero India 2023 on Monday. Okay, and in a first of the expo, European defense majors like Airbus and Thales have announced that they would hold interactions for potential recruitment with aspiring candidates. अब इसका aim क्या है? The aim of the event is to promote exports of air platforms with focus on light combat aircraft and also attract foreign investment इंक्लूडिंग ऑन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे द एक्सपो कंप्राइजेज अ डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, सीईओज राउंड टेबल, मंथन विच इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टअप इवेंट, देन बंधन सेरेमनी, एयर शोज, देन इंडिया पवेलियन एंड ट्रेड फेयर ऑफ एरोस्पेस कंपनीज. Then the event will see the participation of 98 countries and defense ministers of 32 countries, air chief of 29 countries and 73 CEOs of global and Indian original equipment manufacturers. Now let's see what is Manthan then. The annual defense innovation event, that is Manthan, will bring leading innovators, startups, MSMEs, incubators, academia and investors from defense and aerospace ecosystem under one roof. That is called as Manthan. Now the next is again from defense, India-US unmanned aerial vehicle to be flight tested this year. So a prototype of air-launched unmanned aerial vehicle, that is ALUAV, developed jointly by India and United States is likely to be flight tested later this year. So it was in 2021 that the Indian Ministry of Defense and US Department of Defense signed a project agreement for ALUAV under the Joint Working Group Air System in Defense Technology and Trade Initiative. Now see who all have been involved in this project. So Aeronautical Development Establishment and Aerospace System Directorate of US Air Force Research Laboratory along with Indian and US Air Forces are the principal organizations for the execution of this agreement. The next again, 4 High Courts get Chief Justices, but 2 will retire in February. So again we will make a table over here for easy remembrance. तो यहाँ पे देखेंगे that Justice Sandeep Mehta appointed as the Chief Justice of Guwahati High Court. Justice Koteshwar Singh has been made Chief Justice of High Court of Jammu Kashmir and Ladakh. Then Sonia Giridhar Gokani, she will be the Chief Justice of Gujarat High Court. अभी आपने देखा होगा Ananda Kumar, who was the earlier Chief Justice of Gujarat High Court. Now he has been elevated as the Supreme Court Judge. Then if you will see that Justice Sabina is currently the only woman heading a high court, that is of she is the acting Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. So once Justice Gokani takes the oath, she will be the second woman heading the High Court. But she will retire on February 25 at the age of 62. So the retirement age for High Court judges is 62 years and that of Supreme Court judges is 65 years. Then Justice Jaswant Singh was appointed as the Chief Justice of Tripura High Court. He was the senior most judge of Odisha High Court. Then you will see that the office of the Chief Justice in Tripura High Court has been vacant for some time. Now coming to editorial. So first is Cyprus Foreign Minister Christo Doloudis has been elected as the new president. So this is very important. Okay. It is a one-liner for us. Then Cyclone Gabrielle. So New Zealand Prime Minister asked citizens to be prepared for Cyclone Gabrielle. So Cyclone Gabrielle is forecast to envelop the upper half of the North Island over a 48-hour period. The next is China planning Aksai-Chin railway line to connect Tibet and Xinjiang. So China का already एक national highway है
which connects Tibet and Xinjiang, that is G219 National Highway. Now China is also proposing a railway line. Okay, China is also proposing a railway line parallel to G219, parallel to G219. So it is a highway and this will be the railway. ठीक है, सो यहाँ पे होगा कि एक तो ये चाइना को बूस्ट करेगा बॉर्डर सिक्योरिटी बाय एनेबलिंग चाइना टू मूव क्लोजली टू मोर क्लोजली इंटीग्रेट द बॉर्डर एरियाज and to mobilize quickly to frontier when needed, and second, accelerating Tibet's economic integration with the hinterland. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.